Hello, sir. Hi. Hi, am I audible? Yes, you're audible. Yeah, Am I audible? yeah, I can hear you clearly. Great. How's your day been? Pretty hectic, honestly. Lots of work. Yeah, we'll just wait for like 1 or 2 minutes for everybody to join in. Yeah. How many people are we expecting? Um, I maybe 100 or so or more. More the merrier. More than, sorry? More the merrier. Okay. You're joining from Bangalore? No, I'm from Mumbai. Or you're from Mumbai? Okay. Yeah, I'm like a crazy Shark Tank fans. I've seen like so many episodes. All the episodes I've seen. Everybody in the live, I would like y'all can put in the questions later on. Like after the interview, we'll have a Q&A session. Y'all can type your questions in there. Then we'll have a separate Q&A session. Then Am I audible? yeah. Okay. Um, I think I'll start. The others can join in. So before I start asking questions, I would like to do a small. I would like to give a small introduction. So Rahul sir has been a former employee at Paytm and Deutsche Bank. He has done his BTech in Electronics and Communication Engineering from DAV Institute of Engineering and Technology in Jalandhar. And obviously, we've all seen his amazing, extremely clear and sharp pitch at Shark Tank Season 3. And with rupees 20,000 only and a second-hand laptop, Sir has marked the crazy beginning of interview, and which is the company is now valued at 123 crores. And जितना crazy ये सुनने में आ रहा है, I'm sure उतनी ही crazy inspiring journey होगी. And I'm pretty sure all the aspiring entrepreneurs over here can relate to this, and we are all very excited to learn from you. Thank you for the introduction. So how has your life changed after the Shark Tank episode aired? Yeah, honestly, मतलब for interview itself, interview.io, lot of things changed because a lot of people know our brand now. Correct. Lot of people want to inquire about the brand and see if they want to use it or not. Secondly, a lot of people recognize me by my face, which is surreal, weird at the same time, good weird, but it's weird to just walk out in public and being recognized. So I mean, yeah, that's there. Apart from that, it has affected the company in a positive way because uh, uh, my team itself that works at interview, it's they're super motivated. They're super high energy. But to see the company actually airing on TV, so yeah, I mean that's how it is. It has been. So not much has changed from a perspective of how we work, but few things have changed from a perspective of how people know us now. So that's pretty good. I'm sure. So what motivated or what pushed you to go for Shark Tank, or like were you in for the expertise, the money, or the funding, or was it like marketing
from a marketing perspective that you wanted to go and probably market your company? यार ऑनेस्टली फ्रॉम अ मार्केटिंग पर्सपेक्टिव तो बिल्कुल भी नहीं, Hmm. बिकॉज हम आई मैंने तो नहीं सोचा था, बिकॉज वी आर अ B2B ब्रांड. Correct. So we thought that it won't work out because Shark Tank is more direct to consumer. कि सीधा यूजर्स जो खरीदने वाले होते हैं, अगर वो शो देख रहे हैं तो आपका ब्रांड ज्यादा बेनिफिट करता है. आई वॉज रॉन्ग देयर, बट हेंस मार्केटिंग वॉज नॉट द इंटेंट. रॉन्ग इसलिए था Hmm. क्योंकि जो बाद में रिजल्ट आए वो टोटली ऑपोजिट. The idea was to just go in the tank, get the exposure of how it is like, and see if someone uh, would be ready to put in money, would want to come on the cap table, because people who sit there, they of course bring in a lot of value and expertise. So Definitely. So before you enter the tank, were you like who were you, which shark were you expecting to collaborate कि इनसे तो चाहिए, इनसे ये अगर आ गए कंपनी में हेल्प करने के लिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा एंड ऑल? ऑनेस्टली किसी से भी नहीं. ऐसा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं था कि कोई ऑफर दे देगा, या ऐसा भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था कि एक पर्टिकुलर शार्क से ऑफर मिल जाए. नॉट नन ऑफ वी डिड नॉट एक्सपेक्ट एनी ऑफ दैट. आई टेल यू व्हाट वी एक्सपेक्टेड. Before we Hmm. were entering the tank, the director, the person who was standing outside the tank with me, uh, uh, they told me कि आप अंदर जा रहे हो तो there are no cuts, nothing is gonna happen, nothing is scripted. तो हम कहीं रोकेंगे नहीं. If you fumble, you fumble. If Correct. you mess up, you mess up. But if you shine, you shine. तो पूरा देश देख रहा है, तो जो भी करोगे Hmm. बढ़िया करना. So the idea was to just put interview in front of the country in the most energetic way possible, in the best way possible, and that's what was visible in the pitch as well. तो ऐसा कोई आइडिया नहीं था Yeah, कि I'm किसी sure. एक पर्टिकुलर शार्क को या ऑन बोर्ड लेके आना है. Yeah, I'm sure with Aman sir's response, he was like, you went like rocket sing and full energetic vibe over there. या So आई मीन वो भी the yeah, या आई मीन वो भी I wasn't expecting, honestly. So I was just being natural. I yeah. think he said what he had to say, but yeah, it felt good. But सब कुछ बहुत ही ज़्यादा इस perspective से था कि इंटरव्यू को किस तरीके, बेस्ट तरीका क्या इंटरव्यू को आर्टिकुलेट करने का in front of the country. Correct. So is like as you said that there is no cut when once you enter the tank. So is there any other different process that we do not see on television, or it's like the same as it is portrayed? एकदम सेम है. Honestly, it's just that आपका जो interaction होता है in the tank is comparatively longer. जैसे my interaction was 1.5 hours long, but what came out was just Okay. 20 minutes, right? Hmm. So your interaction is obviously they have to uh, cut certain pieces here and there which they think कि शायद जरूरत नहीं है, या क्योंकि they also have restrictions in how they can release. Of course, it's their call at the end of the day, but interaction थोड़ा लंबा होता है. Apart from that, there's no difference in what happens there and what is actually shown. It's all reality. Hmm. So a little deeper into interviews. So what made you think about this problem? Like you saw that ये interview hiring process में ऐसा problem हो रहा है. Then what made you go from 0 to 1? Because हम लोग in our college also we have campus companies as well who start their own companies, and they join us with our council, and then we provide them with resources or whatever guidance that we can. So they have a lot of ideas, but sometimes they get stuck on how to build it or how to validate it. So how is your process with interview? यार आइडिया बहुत सिंपल है. हमारा आइडिया ये था कि कंपनीज जो हायर करती हैं, तो आइडिया टू 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 फैसेट्स आइडिया के. पहला आइडिया है कंपनीज जो हायर करती हैं उनको हायर करने में बहुत टाइम लग जाता है. जो कैंडिडेट्स कंपनीज में अप्लाई करते हैं उनको कॉल ही नहीं आती बहुत ज्यादा देर, क्योंकि कंपनीज को ना Hmm. इतने सारे एप्लीकेंट्स आ जाते हैं कि उनको स्क्रीन करने में बहुत टाइम लग जाता है. तो हम कंपनी को जाके बोलते हैं यार हमें दे दो, हम उनको टेक्निकली इंटरव्यू कर लेंगे और हम आपको बता देंगे हाँ. कौन से अच्छे हैं कैंडिडेट, राइट. तो आइडिया बहुत सिंपल था कि हम कंपनीज की हेल्प करें, उनको हायरिंग को फास्ट ट्रैक करने में और क्वालिटी कैंडिडेट्स को हेल्प कराने में हेल्प करें. ये पहला फैसेट ऑफ द आइडिया था जो हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया. सेकंड फैसेट ऑफ द आइडिया वाज मॉक इंटरव्यू इटसेल्फ.
लाइक आपने बोला आप कॉलेज में स्टूडेंट्स को हेल्प करते हो टू यू ट्रेन देम फॉर इंटरव्यूज एंड प्लेसमेंट्स, राइट? तो आवर आइडिया वाज आल्सो Correct. सिंपल कि लॉट ऑफ पीपल इन कॉलेजेस दे डोंट हैव एक्सपोजर टू अ रियल कॉर्पोरेट इंटरव्यू, वो होता कैसे है। तो Hmm. हमारा आइडिया सिंपल था कि क्या मैं किसी कॉलेज के स्टूडेंट को एक गूगल इंजीनियर के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ, या एक इंजीनियर जो फेसबुक में काम कर रहा है या Amazon में काम कर रहा है आज, मैं कैन आई कनेक्ट अ कॉलेज स्टूडेंट टू दैट सॉर्ट ऑफ एन इंजीनियर एंड दे कैन हैव अ 1 hour 1.5 hour सॉर्ट ऑफ एन इंटरेक्शन एंड उनको वो एक्सपोजर मिल जाएगा इंटरव्यू Hmm. का। और वो अब हम करते हैं मॉक इंटरव्यूज के थ्रू, राइट? तो आइडिया ये सिंपल था कि अगर उनको वो एक्सपोजर मिल जाए ना तो उनको प्लेसमेंट में हेल्प होगा, और एंड दे कैन एक्चुअली दे वोंट बी नर्वस क्योंकि उनको पता होगा व्हाट टू एक्चुअली एक्सपेक्ट। और या Hmm. फिर अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो एटलीस्ट वो मॉक इंटरव्यू में फेल होंगे, रियल इंटरव्यू में नहीं, राइट? और मॉक इंटरव्यू का ऑब्जेक्टिव ये है कि उनको सही फीडबैक मिल Hmm. जाए एंड वो इंटरव्यूअर जो गूगल से है या Amazon से है वो आपको सही फीडबैक दे देगा और वो बता देगा कि आप कहाँ लैग करते हो, सो दैट यू कैन वर्क ऑन दैट एरिया एंड अल्टीमेटली गेट प्लेस्ड। So that was the overall idea. That's why we launched our product. That's so during, suppose now I'm a TY student and I will be having placements next year. And many people like me, they are also going to sit for placements. Or many people who are also applying for summer internships या winter internships. अभी college semester break होता है तभी. So the problem is that after we are selected for an interview, we always mess up that क्या क्वेश्चंस पे क्या आंसर देना चाहिए और what sets us apart from other candidates. So what do you think, which skill sets or some few things that are needed while we are giving an interview? यार डेफिनेटली मेरे को लगता है अगर आप टेक कैंडिडेट हो और आप किसी टेक कंपनी में अप्लाई कर रहे हो तो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम is something that you should know because हर कंपनी कैंपस में आएगी, वो definitely they ask. Lot of companies come to the campus. They also conduct a programming test which will be more Hmm, around certain questions that you should be able to solve more around data structure algorithm itself. correct. तो वो एक चीज है जो आपको पता डेफिनेटली होनी चाहिए। उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है यार आज की डेट में देर आर मोर कॉलेज स्टूडेंट्स हैव बिकम मोर हैंड्स ऑन। Hmm, इंटर्नशिप में ही वो बहुत कुछ सीख लेते हैं, तो आई थिंक I would like to tell every student that they should definitely go for internship programs during college. They should work with any startup or any company during their college days and learn that hands-on programming ताकि उनको वो exposure पहले मिल जाए। Apart from that, once you have learned DSL etc., you can always take an evaluation online. जैसे मान लो कहीं ऑनलाइन ले लिया किसी भी प्लेटफॉर्म पे या इंटरव्यू पे आके मॉक हाँ, इंटरव्यू कर लिया, राइट? वो इवैल्यूएशन की आपको अगर रिकॉर्डिंग मिल जाए, जो कि मिलती है, राइट? वो मिल जाए तो आप उससे बहुत लर्न कर सकते हो, आप उससे देख सकते हो मैं कहाँ कहाँ लैग कर रही थी या कहाँ कहाँ लैग कर रहा था, एंड दीज आर द इम्प्रूवमेंट एरियाज दैट आई कैन वर्क अपॉन। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे को लगता है अगर आप फ्यूचर स्किल्स की बात करोगे तो मुझे लगता है वी आर हेडिंग इनटू एन एरा जहाँ पे एवरीथिंग इज गोना बी एआई फर्स्ट, correct. राइट? तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जरूरी है आपको एआई बनाना आता हो, नो। यू शुड बी जस्ट फॉर नाउ द डे एंड एज द ईयर दैट वी आर सिटिंग इन, आपको एटलीस्ट अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है। You should be aware of the tools that exist in and around which are built on top of those AI models. वो पता होने चाहिए and how those tools can actually help you solve a particular problem statement. Example, आप कोई जैसे एप्लीकेशन बना रहे हो, मे बी ऐप बना रहे हो एंड उसका कोई बैकएंड लिख रहे हो, तो एआई Hmm, आपकी वहाँ कितनी हेल्प कर सकता है, कैसे हेल्प कर सकता है, व्हाट आर द टूल्स। जैसे को पायलट एक टूल है, बहुत अच्छा टूल है, राइट? आप उसको यूज कर सकते हो when you're coding. If you have this real world knowledge, it will help you cross that bridge when you are giving a real इंटरव्यू। कंपनी से लोगों को भी ये पसंद आता है कि आपको वो एक्सपोजर है, सो दे डोंट हैव टू ट्रेन यू फ्रॉम स्क्रैच। यू कैन डायरेक्टली कम इन एंड दे विद अ लिटिल बिट ऑफ ट्रेनिंग हियर एंड देयर यू कैन गेट स्टार्टेड। correct. Uh, Also, we are so when you also said that in an interview, I think that you faced a lot of hurdles when you were approaching a company, when you were approaching for investors for funding, because they always used to say that आप IIT या IIM का background नहीं है. And similarly, we are also a second tier two college. So what would you say that to keep in mind that we should also get the same opportunities? क्या मुझे लगता है कि आज की डेट में ना ये मैटर नहीं करता। मेरे को जब लोगों ने ये बोला था, इट वाज बैक इन 2012 2013, राइट? और उस वक्त इंडिया में इकोसिस्टम इतना इवॉल्व नहीं था, इतनी ज्यादा एक्सेस
एक्सेस बहुत लिमिटेड थी कंपनीज में. आज की डेट में with social media and all of this connectivity in place, you can pretty much, and there are so many products that are out there in the market helping students only, right? आप किसी भी कंपनी में किसी से भी you can actually connect and get in touch with them and know कि कैसे जा सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल इंटरव्यू पे आके आप गूगल इंजीनियर के साथ बात कर लो, माइक्रोसॉफ्ट के इंजीनियर के साथ बात कर लो, या कोई एवरेज कंपनी भी उठा लो, जैसे कि या कोई सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन उठा लो, सेपिएंट से बात कर लो, एमएमटी के इंजीनियर से बात कर लो, वो भी कर सकते हो, राइट? तो ऑल ऑफ दोस थिंग्स आर पॉसिबल टुडे. तो मुझे लगता है आज का एरा ऐसा है कि मैटर नहीं करता आप टीयर 1 से हो, टीयर 2 से हो, टीयर 3 से हो, डजंट मैटर. व्हाट मैटर्स इज इफ यू हैव दैट हंगर, यू कैन एक्चुअली फाइंड दैट अपॉर्चुनिटी इजीली टुडे. एंड अगर वो अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, उस अपॉर्चुनिटी तक पहुंचना कैसे है, उसके भी ऑनलाइन आज की डेट में बहुत कोर्सेज है. यू जस्ट नीड टू हैव दैट विल टू एक्सप्लोर द कोर्स, लर्न एंड गेट इन टच विद समबडी, नो मोर हाउ यू कैन गेट इन एन ऑर्गेनाइजेशन. तो बहुत सिंपल है मेरे को लगता है आज की डेट में. तो आईआईटी आईआईएम से होना सब कुछ नहीं होता. आई नो अ Yeah. लॉट ऑफ आईआईटीएंस जिनकी प्लेसमेंट भी नहीं होती. आई नो अ लॉट ऑफ देम. आई नो अ लॉट ऑफ आईआईटीएंस जो एक टीयर 3 कॉलेज से भी कम सीटीसी में काम कर रहे होते हैं. सो और सेम विद आईआईएम्स, राइट? ऐसा नहीं होता सारे आईआईएम से निकल के तो उनकी बहुत हाई Correct. पैकेज प्लेसमेंट होगी. मीडिया फ्रेंजी इज समथिंग एल्स. जो रियलिटी है वो रियलिटी है. तो आज के दिन में मेरे को लगता है टीयर 3 डजंट मैटर. आपका इंटेंट क्या है वो ज्यादा मैटर करता है. आप कितना हार्डवर्क कर सकते हो वो ज्यादा मैटर करता है. So just persistent होना is important. या And so, again, coming back to Shark Tank, you came with you asked for 1.5 crore for 1%, and you were offered a valuation which was 50% lower. So you readily accepted that, right? So any particular reason why you accepted that? यार थॉट प्रोसेस बहुत सिंपल था. वो ये था कि इफ the other person is willing to give you money and they can come on the cap table, maybe they can increase the value of the company going forward by bringing their expertise on the table and contributing to the company indirectly in some way or the other by giving the right direction to the company. आई थिंक यही थॉट प्रोसेस था ऑनेस्टली. इसके अलावा कोई थॉट प्रोसेस नहीं था. मुझे ऐसा भी लगता है कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे स्पेशली व्हेन यू हैव टू टेक अ डिसीजन रन ऑफ द मिल, वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसिडर टॉप टू 3 फैक्टर्स इन माइंड. और मेरे दिमाग में यही था जब मैंने वो डिसीजन बनाया. दिस नो अदर थिंग दैट आई थॉट ऑफ. Any Can you mention one of those top 2 or 3 factors that you had in mind while? इंटरव्यू का फ्यूचर क्या है, अभी हमारे पास कितना स्किन इन द गेम है, अगर हम किसी को ये दे देते हैं फ्यूचर राउंड कितनी वैल्यूएशन पे हो सकता है. ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स वर देयर एंड व्हाट एक्चुअली अमन वुड ब्रिंग ऑन द टेबल. ये छोटे छोटे फैक्टर्स थे जिसके बेस पे वी टुक द डिसीजन. And now that interview has reached like such a high scale, what do you think is your plan for the next 4 or 5 years coming? यार प्लान बहुत सिंपल है. वी वांट टू कनेक्ट to every company and ask them to take interviews through interview.io. So that's the plan. Second is we also want to help colleges, students sitting in colleges to get that industry experience just by a click of a button. जो आज भी doable है, but we also want to make sure that we spread the word among students and colleges to do that. तो कम कि वो आए और mock interview. तो idea ये है कि हम पूरा एक interview का full blown ecosystem बन जाए and ताकि कॉलेज या स्टूडेंट्स यहाँ पे इंटरव्यू ले सकें, कंपनीज अपने अप्लाइड कैंडिडेट्स को इंटरव्यू कर सकें एंड अल्टीमेटली शॉर्टलिस्ट करके हायर कर सकें. तो मोर रियल वर्ल्ड देन एनीथिंग एल्स दैट एग्जिस्ट आउट देयर, राइट? Yeah, so the more they are getting the hands-on experience, the better for their future. या करेक्ट, एग्जैक्टली. Also, there were you had previews. You've been like you have established startups पहले, and they did not do well. So what are some key lessons that you learned from there that you applied in interviews so that वही same mistakes repeat now and या interviews are such a को लगता है success now? मेरे को लगता है फेलियर होना बहुत जरूरी है. एंड वंस यू फेल मल्टीपल टाइम्स यू डोंट थिंक फेलिंग इज अ बिग डील. तो आप उसे डरना बंद कर देते हो. मेरे को लगता है वो होना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड दैट्स व्हाट माय प्रीवियस स्टार्टअप्स टॉट मी कि इट्स ओके टू फेल ऑनेस्टली. सेकंड वन वुड बी आई रियलाइज दैट यू नीड टू बी क्लोज टू द कस्टमर. अगर आप कुछ बना रहे हो और आप कस्टमर से दूर होकर बना रहे हो तो आप कुछ ऐसा बना दोगे जिसकी कस्टमर को नीड नहीं होगी एंड दे वोंट पे यू फॉर दैट. एंड अल्टीमेटली योर प्रोडक्ट
won't fly, you won't get to make revenue, etc etc। एंड स्टार्टअप्स के पास ना बहुत लिमिटेड टाइम होता है हर चीज का। Hmm. तो वो कम से कम टाइम में आप कस्टमर के पास रह के कैसे कर सकते हो, दैट्स ऑल अबाउट बिल्डिंग अ स्टार्टअप, राइट। तो ये मेरी दूसरी लर्निंग थी व्हेन आई फेल्ड। थर्ड, मुझे ये रियलाइज हुआ कि स्टार्टअप जर्नी बहुत अप्स एंड डाउन वाली है, सो यू नीड टू बी रेजिलियंट, यू नीड टू बी परसिस्टेंट, एंड एवरी डे यू नो सम डेज यू फील लाइक अ किंग, द नेक्स्ट डे यू फील लाइक अ beggar। सो ऑनेस्टली स्टार्टअप जर्नी इज ऑल अबाउट दैट। तो एक दिन आपका बहुत अच्छा जाएगा और अगला दिन यू माइट बी लिटरली यू नो यू माइट स्पाइरल डाउन। तो मेरे को लगता है यू हैव टू अट्यून योर ब्रेन टू दैट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई थिंक दोज फेलियर्स एक्चुअली टॉट मी हाउ टू अट्यून योर ब्रेन टू दैट एंड जस्ट बी stable and simple and keep working hard। Okay, correct. And the final question is that you belong to you have background in electronics and communication engineering, and now you have done work experience in Paytm and Deutsche as a software developer. So how did you have developed such a strong tech foundation given that आपका background electronics में है? यार तो पहला जो मेरा स्टार्टअप था ना, तो मेरे को हमेशा से टेक एंटरप्रेन्योर बनना था, बट जो मेरा पहला स्टार्टअप था वो इस वजह से फेल हो गया था क्योंकि मुझे कोडिंग नहीं करनी आती थी और मैं इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से था। तो मैंने सोचा अगर मैं अब कोडिंग नहीं सीखूंगा ना तो मैं अपना अगला स्टार्टअप नहीं बना पाऊंगा। Hmm. तो मैंने आई learned computer science in 6 months, and I started coding. This was after fourth year passed, and उसके बाद I took some jobs. That's where I worked at Paytm and Deutsche, and उसके बाद I started up, right? तो the whole idea was कि अगर कोडिंग नहीं सीखूंगा तो कुछ करना ही नहीं आएगा, और अगर सीखनी है तो ये हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। तो I did that and it helped in interview, right? तो इंटरव्यू में आज की डेट में भी वो हेल्प करता है क्योंकि इंजीनियरिंग कैसे चलती है और उसमें निटिग्रिटीज में कैसे चलती है, आई 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 एम अवेयर अबाउट दैट। सो ये आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मैं वही बोल रहा हूँ कि आज की डेट में आप ऐसे एरा में हो कि आपको कुछ भी करना है, आप कुछ भी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट, यू कैन जस्ट लर्न एंड you can just apply, you just have to need to have the will and the intent to work hard। Hmm. हम लोग I'm still a third. I'm a computer engineering student. I still find a lot of difficulties coding me. So I get it. It's tough, but it's fun. Yeah। Okay, have keep the question and answer panel open. Everybody in the live, you all can just share in your questions. तो महेश्वरी है क्वेश्चन की डीएसए सीखा था या वेब डेवलपमेंट। देखो यार ऑनेस्टली वेब डेवलपमेंट में जाना जाना बहुत ज्यादा आसान है क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज हैं ऑनलाइन, सीखना भी बहुत आसान है। तो आपको आप डिपेंड करता है आप करना क्या चाहते हो, यू वांट टू बी मोर हैंड्स ऑन। मैंने क्या सीखा था पर्सनली, जब मुझे कंपनी से करनी थी डीएसए वाज अ नो ब्रेनर, करना पड़ता है क्योंकि इट्स द फर्स्ट राउंड दैट एनी कंपनी टेक्स। ऑल्सो डिपेंड्स ऑन आप किस रोल किस प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हो। हर कंपनी का फर्स्ट राउंड डीएसए नहीं होता, बट अगर आप लिटरली बैक एंड इंजीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर किसी कंपनी में बनना चाहते हो वो पक्का लेंगे डीएसए राउंड। तो डीएसए तो सीखा ही था मैंने, बट वेब डेवलपमेंट वगैरह साथ में चल रही थी, तो जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, एंगुलर प्रीटी मच। उसके बाद यू नो मैंने तो बहुत जगहों पे हाथ पैर मारा है, पाइथन में भी, एंड्रॉइड वगैरह में भी, बट आई थिंक वेब डेव इज अ सेफ प्लेस टू स्टार्ट। बट उसमें प्लीज एआई का ध्यान जरूर रखना, देखना एआई कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है ताकि यू नो व्हाट टू लर्न, Hmm. क्योंकि एचटीएमएल सीएसएस जैसी चीजें अब ऑटोमेट होने वाली हैं। उसका ऐसा नहीं होगा कि एचटीएमएल सीएसएस डेवलपर का कोई ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग फ्यूचर है, बिकॉज इट्स ऑल कैन बी इजीली बिल्ट एंड टेम्पलेटेड बाय एआई ओनली। So somebody, Tanay has asked that after Shark Tank, you started posting a lot of content. So why and what made you what pushed you to make content? यार ऑनेस्टली मेरे को लगता है आज की डेट में एक पर्सनल ब्रांड होना जरूरी है। बहुत ऑनेस्ट आंसर दे रहा हूँ। और पर्सनल ब्रांड का मतलब ये है कि आप यू होल्ड सर्टेन क्रेडिबिलिटी वेयर यू आर बिल्डिंग अ बिजनेस, आपको उस बिजनेस के बारे में सबसे ज्यादा पता है, और वो आप तभी फैला सकते हो इफ यू पोस्ट अबाउट इट, राइट। हेंस आई स्टार्टेड पोस्टिंग कंटेंट। शार्क टैंक के टाइम पे क्योंकि मैं बहुत टाइम से करना चाहता था, शार्क टैंक का टाइम बहुत ज्यादा lucrative था because I had a lot of eyes seeing me. So the whole idea was अगर मैं इस वक्त content push करता हूँ then a lot of people can get access to that content and they can eventually see if the content is valuable to them or not.
तो hence I started creating content. मुझे लगता है अगर पर्सनल ब्रांड आप बनाओगे, कल को आप कुछ भी कर रहे हो उसमें हेल्प करेगा. इट माइट बी योर बिजनेस, इट माइट बी योर स्ट्रैटेजी, योर गो टू मार्केट, एनीथिंग. Then somebody has asked, how did you make the valuation of your company for Shark Tank? यार वैल्यूएशन का बहुत सिंपल सा फंडा होता है. आप डिपेंड करता है आप किस बिजनेस में हो, आपका टाइम क्या है, आप कितनी जल्दी ग्रो कर रहे हो, बहुत फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. आपकी टीम कैसी है. फॉर एग्जांपल आज के एआई स्टार्टअप्स पकड़ लो. मतलब बहुत छोटी कंपनीज भी $1 बिलियन पे वैल्यू हो रही है बिकॉज ऑफ व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू. तो इसका कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है, बट मैं अपना स्पेसिफिक आंसर अगर दूं, माय माय थिंग वाज सिंपल कि वी आर अ SaaS प्रोडक्ट, वी आर अ टेक SaaS प्रोडक्ट. सो व्हाट वी हैव टू डू इज हमारा जितना रेवेन्यू है, अगर मैं उसका सिंपली 10 या 12x कर दूं, विच इज मॉडरेट सॉर्ट ऑफ अ वैल्यूएशन दैट आई एम आस्किंग फॉर, इट्स अ फेयर आस्क, राइट. तो और टेक Hmm. प्रोडक्ट्स का अगर आप 2021 में जाओगे, इट वाज 30x. 2021 आउटलायर ईयर था, बट उसके बियॉन्ड अगर आप देखोगे, आई थिंक 15x इज अ सिंपल आस्क. सो दैट्स व्हाट वी प्रीटी मच डिड. तो ये हमारा कैलकुलेशन करने का वो था, मेथोडोलॉजी. Then Abish has asked, how can I approach investors to invest in my startup idea? यार पहले तो ना, जब इन्वेस्टर्स को अप्रोच कर रहे हो ना, आपको क्लियर होना चाहिए आप इन्वेस्टर्स को अप्रोच क्यों कर रहे हो. अगर ऐसी मैं ये बता देता हूँ, इन्वेस्टर्स आप में पैसे तभी डालेंगे जब आपको पता है आप ग्रो करने वाले हो और आपको क्लैरिटी है आप बना क्या रहे हो. अगर आप इन्वेस्टर्स के पास इस माइंडसेट से जा रहे हो कि ओ मुझे पैसों की जरूरत है और मुझे पैसे दे दो, इन्वेस्टर माइंडसेट ये नहीं होता. इन्वेस्टर माइंडसेट ये होता है कि इफ दे इन्वेस्ट इन यू, विल दे मेक मनी आउट ऑफ इट, राइट. Hmm. ये रियलिटी है. अगर आप उनको ये दिखा नहीं पा रहे हो ना, तो उनको अप्रोच मत करो. ये पहली चीज है. नाउ हाउ, अगर ये आप किसी तरह उनको दिखा सकते हो अपने प्रोडक्ट के थ्रू जो कि बना हुआ है, इट हैज अ प्रूवन, लेट्स से कोई मॉनेटरी वैल्यू उसके साथ अटैच्ड है और देयर आर पीपल पेइंग यू, देयर इज अ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट. तो आप अगर आपको इन्वेस्टर्स को अप्रोच करना है, बहुत तरीके इन्वेस्टर्स को अप्रोच करने के. बहुत सारे फंड्स हैं आज की डेट में इंडिया में. इंडिया का इकोसिस्टम काफी ज्यादा इवॉल्व हो गया है पहले से. बहुत सारे फंड्स हैं, आप उनको कोल्ड ईमेल करो. इफ एंड यू नीड टू नो द आर्ट ऑफ पिचिंग योर स्टार्टअप आइडिया, राइट. ऑल्सो बहुत कुछ लिखोगे तो दे माइट गेट टर्न ऑफ. बहुत कम लिखोगे, दे माइट नॉट नो एनीथिंग. सो यू हैव टू मेक श्योर आप बैलेंस तरीके से लिख रहे हो जो भी लिख रहे हो, और आप क्रिस्प तरीके से वो बता पा रहे हो. अगर आपको अपना बिजनेस क्रिस्प तरीके से बताना आता है, दे माइट बी मोर इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू यू. आप उनको कोल्ड ईमेल करो, आप उनको कोल्ड रीच आउट करो, दे विल डेफिनेटली टॉक टू यू. आई थिंक इसके अलावा बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जहाँ इन्वेस्टर्स आते हैं यार. आप उनको वहां पे जाके मिल सकते हो, बट जस्ट मेक श्योर वॉट एवर यू आर पिचिंग, आपको उसकी पूरी क्लैरिटी है, आपको अपने बिजनेस की क्लैरिटी है, आप अपने कस्टमर के पास हो. मैं हर बंदे को यही बोलता हूँ, एनी पर्सन हु वांट्स टू स्टार्ट अप टुडे एंड दे हैव एन आइडिया इन माइंड, उनको मैं बोलता हूँ दे शुड नो 3 थिंग्स. वन इज दे शुड नो टैम, टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज, क्योंकि जनरली एक स्टार्टअप को बड़ा करने में 7 से 10 साल लग जाते हैं. और Hmm. अगर आपको टैम नहीं पता क्या है, और टैम या इतना बड़ा नहीं है, नो पॉइंट इन वर्किंग सो मच, राइट, क्योंकि वो इतना बड़ा आउटकम ही नहीं दे पाएगा आपको. तो टैम पता होना चाहिए, कॉम्पेरेटिव लैंडस्केप पता होना चाहिए, आपके कॉम्पेटिटर्स कौन है जो आप लॉन्च कर रहे हो, जो चीज आप लॉन्च कर रहे हो क्या वो मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, अगर करती है तो कौन, किससे कम्पीट कर रहे हो आप, ये दूसरी चीज है. और इन एंड आउट पता होना चाहिए कंपटीशन के बारे में. तीसरी चीज ये पता होनी चाहिए यूएसपी क्या है, आप यूनिक क्या कर रहे हो. क्या आपकी यूएसपी लीनियरली बेटर है या एक्सपोनेंशियली बेटर है. आपकी कॉम्पिटिशन, इट कैन बी योर प्राइसिंग स्ट्रेटजी, इट कैन बी योर डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी एज वेल. जरूरी नहीं है प्रोडक्ट ही डिफरेंट होना चाहिए, आपकी प्राइसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन लेड बिजनेसेस भी बहुत बड़े बनते हैं. तो ये तीनों फैक्टर्स बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं. अगर आपको इनकी नॉलेज है तो आप इन्वेस्टर्स को अप्रोच कर सकते हो. एंड आपको क्लैरिटी होनी चाहिए आप इन्वेस्टर्स को अप्रोच क्यों कर रहे हो. मतलब आपको पैसे क्यों चाहिए, क्योंकि बिजनेस अल्टीमेटली उसी से स्केल होगा, राइट. सो दैट्स व्हाट यू नीड टू बी अवेयर ऑफ. Then uh, so Divyansh has asked, what are your plans to integrate with other companies' career portals for streamline? यार अभी ऐसा कोई पाइपलाइन में हमने ऐसा कुछ सोचा नहीं है कि हम जाके किसी करियर पोर्टल या जॉब बोर्ड के साथ टाई अप कर लें. हाँ, हम एक चीज कर दैट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू डूइंग इज, वी डू वांट टू we do want to integrate our mock interview product with a lot of job portals, ताकि कैंडिडेट जो वहाँ अप्लाई कर रहे हैं वो वहीं पे एक उनको मॉक इंटरव्यू लेकर रिपोर्ट मिल जाए.
जो आज की डेट में आप इंटरव्यू में भी कर सकते हो ऑनेस्टली। लेकिन हाँ, है प्लान आगे जाके, है अभी नियर फ्यूचर में नहीं है, बट आगे जाके जहाँ हम जॉब बोर्ड के साथ इंटीग्रेट कर दें और वहीं पे आपको अपनी रिपोर्ट दिख जाए, आपको अपने राउंड की रिकॉर्डिंग में मिल जाए। आज की डेट में अगर आपको ये चाहिए आप interview.io पे कर सकते हो, लेकिन कल को हम जॉब बोर्ड के साथ इंटीग्रेट करेंगे, बट मे बी 6-8 months डाउन द लाइन। Okay, and we'll take one or two more questions and then we'll wrap up. So, Khyati has asked, how did you acquire the skills to be the leader you are today? I think that's like a very motivating and inspiring question for all of us. I think by working hard, that's one. Second, by being goal oriented. आपको अगर clarity है आपको what you want to do in life, you will take actions, right actions in that direction to become that person. तो ये दो चीजें बहुत जरूरी है, हार्ड वर्क एंड क्लैरिटी ऑफ द डायरेक्शन, ताकि खाली हार्ड वर्क मत करते रहो, एक डायरेक्शन में हार्ड वर्क करो। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, जब आपको पता चल गया कि ये डायरेक्शन है और मेरे को इतनी मेहनत करनी है, तो मे बी इफ यू डिफाइन सिग्निफिकेंट माइलस्टोन्स और वो माइलस्टोन को चेस करोगे, तो जो भी छोटे मोटे हर्डल्स आएंगे ना वो बहुत छोटे लगेंगे एंड एवरीथिंग विल बिकम अ लर्निंग एक्सपीरियंस। तो छोटे मोटे हर्डल्स मींस फेलियर्स, जिसको लोग बहुत बड़ा बना लेते हैं अपनी लाइफ में कि ओ मैं फेल हो गया, या मैं फेल हो गई, अब क्या होगा, आई मेरा कुछ नहीं बनेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। फेलियर्स आर जस्ट एन एक्सपीरियंस, देयर आर लर्निंग। अगर फेल नहीं होगे तो आपको गिर के उठना नहीं आएगा। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सो बेसिकली हार्ड वर्क इन अ डायरेक्शन एंड देन हैविंग माइलस्टोन्स एंड देन चेजिंग दोज माइलस्टोन्स। बीच प्रोसेस में 10 बार फेल हो जाओ, जाओ, कोई दिक्कत नहीं, बट क्यों फेल हुए ये जानना जरूरी है, उसको एनालिटिकली एनालाइज बहुत करना जरूरी है। और जब जब व्हेन यू एनालिटिकली एनालाइज इट, आप उस मिस्टेक को दोबारा रिपीट मत करो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। न्यू मिस्टेक्स करो कोई बात नहीं, बट रिपीट मत करो। मैंने भी I've done thousands of mistakes, but the idea is to not repeat them. And I wanted to know, how did you identify the product market fit for interview? यार हमारा आइडिया ना बहुत सिंपल था। काफी लोग क्या करते हैं, वो लोग ना प्रोडक्ट में बहुत कैरिड अवे हो जाते हैं एंड दे डोंट रिलीज द प्रोडक्ट टू द कस्टमर। वी वर लाइक लेट्स बिल्ड समथिंग सुपर स्क्रैपी which probably is not that good looking, it's okay, whatever we can ship in 2 months, and that's what we gave as a deadline। तो हमने बोला 2 महीने में, स्पीड इज एवरीथिंग। अगर आप स्पीड नहीं हो ना, स्टार्टअप में स्पीड से काम नहीं कर रहे हो, यू विल डाई। या तो आपको अपनी खुद की डिमोटिवेशन मार देगी, या फिर आप यू विल रन आउट ऑफ मनी, या यू विल रन आउट ऑफ मे बी आप जिसके साथ काम कर रहे हो दे विल गेट डिमोटिवेट, कुछ भी हो सकता है, राइट? इट्स वेरी डायनेमिक। सो स्पीड इज एवरीथिंग। अगर आप स्पीड से जा रहे हो, आप ये सारी चीजों को किल कर सकते हो। तो बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली मेरे को लगता है जो हमने किया, वी वेंट विद द राइट स्पीड, राइट माइंडसेट, कि जल्दी से तेजी से प्रोडक्ट बनाते हैं। वी रिलीज इन द मार्केट एंड हमने बहुत ज्यादा तेज इटरेट किया कस्टमर से फीडबैक लेके। तो कोई भी अगर प्रोडक्ट बना रहा है, प्रोडक्ट मार्केट फिट देखना है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन एंड स्टे क्लोज टू द कस्टमर। काफी लोग ये बोलते हैं कि मैं ना प्रोडक्ट 6 महीने बाद रिलीज करेंगे एंड तब हम कस्टमर से बात करेंगे। दैट्स द मोस्ट स्टूपिडेस्ट थिंग दैट यू कैन डू ऑनेस्टली। आप जब प्रोडक्ट बना रहे हो, वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप द कस्टमर लिटली। आप उस कस्टमर को बाजू में बिठा सकते हो ना, बिठा लो, लिटली Hmm. इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू कैन इटरेट विद देम एंड बिल्ड समथिंग दैट दे विल इवेंचुअली पे फॉर। एंड इसके बीच रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट। जरूरी नहीं है कस्टमर जो बता रहा है वही सच है, रिसर्च भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके कॉम्पेटिटर्स क्या कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया, आपकी यूएसपी क्या हो सकती है, हाउ कैन दैट एड वैल्यू टू व्हाट द कस्टमर इज ट्राइंग टू डू। सो ये सारी चीजें आर इन अ नटशेल will help you achieve PMF. So you mentioned about competition. So how do you plan on always, if like, suppose if another company also starts with a similar idea, right? So how do you plan on still remaining at the top and keeping your company still one of the best in यार your आपको ना, domain? आपको अपने बिजनेस, जब आप कस्टमर के पास होते हो ना, और आप कस्टमर से बहुत कुछ, एवरीथिंग इज स्टेइंग क्लोजर टू द कस्टमर ऑनेस्टली, एंड देन मेकिंग श्योर दैट यू आर रिसर्चिंग मोर एंड मोर अबाउट द कस्टमर बाय नॉट जस्ट टॉकिंग टू देम, राइट, रीडिंग अबाउट देम कि उन्होंने वो ये बोला था, बट लेट मी रीड कंटेंट ऑनलाइन एज Hmm. वेल। मैं वैलिडेट करता हूँ उन्होंने जो बोला था वो सच है कि नहीं। तो अगर आपको अपने कस्टमर के बारे में सब कुछ पता है ना, इट डजंट मैटर व्हाट योर कंपटीशन इज डूइंग। अब उनके बारे में रिसर्च रखो वो क्या कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको अपने कस्टमर के बारे में पता है, यू विल बिल्ड फीचर्स
relevant to your customers. काफी लोग ना कंपटीशन से कैरिड अवे हो जाते हैं, दे वो कंपटीशन पे इतना फोकस करने लगते हैं कि वो कस्टमर से दूर हो जाते हैं, एंड दे स्टार्ट डूइंग थिंग्स जो उनको लगता है मैं कंपटीशन से बेटर कैसे कर सकता हूँ. इट्स गुड टू बी कॉम्पिटिटिव, बट यू नीड टू फोकस ऑन द कस्टमर, नॉट द कंपटीशन सो मच. तो कस्टमर पे ज्यादा फोकस करो, कंपटीशन को ध्यान में रखो, कंपटीशन कर क्या रहा है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट, बट इट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू नॉट गेट कैरिड अवे बाय द कंपटीशन. इट्स इंपॉर्टेंट टू स्टे क्लोजर टू द कस्टमर कि कस्टमर को क्या चाहिए, एंड इफ यू आर क्लोजर टू दैट you will end up building something that's actually valuable to the customer. So and that's how you win, right? Because आप आपके और आपके कंपटीशन में कंपटीशन इस चीज का हो रहा है कि मार्केट कौन ज्यादा एक्वायर कर रहा है, राइट? और मार्केट वही ज्यादा एक्वायर करेगा जो कस्टमर को ज्यादा वैल्यू देगा. Correct. And या many people have been asking about your Shark Tank process, that before you went on the for the in the tank in front of the sharks. So what were the processes before that? How did you approach and how did you pitch then? यार बहुत सिंपल सा प्रोसेस है शार्क टैंक का, एंड आई वाज सरप्राइज इतना सिंपल है. एक फॉर्म है, वो भरना होता है आपको डेडलाइन से पहले. उस फॉर्म में बहुत सारी डिटेल्स होती है, जिसमें वन वन थिंग दैट यू हैव टू मेक श्योर इज यू फिल इट बिफोर डेडलाइन एंड यू बी ऑनेस्ट, एज ऑनेस्ट एज पॉसिबल इन द फॉर्म. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आफ्टर आफ्टर गोइंग पास दैट स्टेप, वो आपका फॉर्म पढ़ते हैं, वो आपको शॉर्टलिस्ट करते हैं, देन दे आस्क यू टू fill another form. Basically दो forms आते हैं in the process. You basically fill those two forms. They ask you for some documentation etc. that you submit. उसके बाद वो आपको एक वीडियो पिच रिकॉर्ड करने के लिए बोलते हैं, 2 मिनट्स की पिच, जो अगर आप टैंक में होते तो आप देते. आप खुद की स्क्रिप्ट लिखते हो, वो पिच हिंदी में होनी चाहिए क्योंकि ऑडियंस अंडरस्टैंड्स दैट मोर. तो आप हिंदी में पिच देते हो, एंड वो पिच रिकॉर्डिंग के बेस पे वो आपको दोबारा शॉर्टलिस्ट करते हैं, आपके फॉर्म को देखते हैं. उसके बाद देयर इज एन इन पर्सन ऑडिशन, जिसमें सोनी की टीम आती है, आपको इवेलुएट करती है. वो नियरेस्ट मेट्रो सिटी जहाँ पे भी होता है वो वहाँ होता है. तो वो इन पर्सन ऑडिशन के बाद दे रिकॉर्ड योर ऑडिशन, एंड देन eventually basis all of this they decide whether to call you in Mumbai and shoot it. And after that कोई गारंटी नहीं है अगर आपकी शूटिंग हो रही है, आपकी पिच एयर होगी टीवी पे. इट ऑल इट्स डिपेंडेंट ऑन द चैनल एंड what criteria they have about shortlisting, but the whole idea is आप अगर ऑनेस्ट हो, आपको अपने बिजनेस के बारे में पता है, ज्यादा पता है, you will eventually end up becoming successful there also. Correct. And last question from my side, that since like we also encourage a lot of entrepreneurs in our college, so what is that one thing that has always keep you going? Because we realize that entrepreneurship is a very tiring process. Like sometimes you also get very demotivated despite all the fanciness that it has. तो कभी डिमोटिवेशन होता है, कभी कभी फिर वो मोटिवेशन चला जाता है कि नहीं हो रहा अभी, इट्स बेटर दैट मैं जॉब ही कर लूँ, नहीं चल रही कंपनी. या ऑल्सो व्हाट इज दैट वन थिंग दैट हैज ऑलवेज केप्ट यू गोइंग? यार मुझे ऐसा लगता है कि हर एक डीप लो के बाद ना एक हाई भी आता है. तो मेरे को लगता है कि देखो ये आंसर ना बहुत सब्जेक्टिव है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी भी करता है, बट आपको क्लियर होना चाहिए आपका गोल क्या है. अगर आपको आपका गोल क्लियर है ना, अगर और गोल वो है कि आपको एक बिजनेस बनाना है या एक सक्सेसफुल कंपनी बनानी है या स्टार्टअप करना है, अगर वो गोल क्लियर है ना, तो इट्स इम्पोर्टेंट कि अगर कोई डिप आ रहा है कि चल नहीं रहा, विच वी कॉल एज अ फेल हो गए हम, फेलियर आ गया, वो फेलियर को बहुत ऑब्जेक्टिवली देखना बहुत इंपॉर्टेंट है. इमोशनल लोग क्या करते हैं, लोग इमोशनली देखने लगते हैं, एंड दैट इज वेयर मोस्ट ऑफ देम उनका बर्नआउट हो जाता है, या वो बोलते हैं मुझसे नहीं अब हो रहा, क्योंकि वो इमोशनली देखते हैं उसको. मैं सबको ये बोलता हूँ, एवरीथिंग इज कॉज एंड इफेक्ट. तो अगर आप वो कॉज एंड इफेक्ट को एनालाइज कर पा रहे हो और आप देख पा रहे हो वो फेलियर हुआ क्यों, और फेलियर को ऐसा इतना बड़ा डील मत बनाओ, ट्रीट इट एनालिटिकली, एंड इफ योर गोल इज क्लियर यू विल गेट पास दैट वेरी इजीली. बट उसको एनालिटिकली देखना बहुत जरूरी है, इमोशनली नहीं. करेक्ट. Okay, that's it for today. Thank you so much for joining, and I hope everybody here had a great time. Thank you all for coming, and thank you so for joining. We had a great time. Thank you so much. I had a great time as well.